I welcome you all in my YouTube channel Coding by Fun, and in this video we will see all the basic mathematics, that is the GCD of two numbers, and also we will find the LCM and also the prime number, and we will see the factorial of a number, right? So we will see the different methods to find these all, and also we will see the tricks or some inbuilt function to find all these things. So let's start. So let's see the new question, and we have to find the GCD of two numbers. So let's see the example first. That is, the input are 98 and 56, and its GCD is 14, and similarly for 48 and 18 the GCD is 6. So what is GCD? GCD is the greatest common divisor between the two numbers, and also you can say HCF, the highest common factor. Now, both are same, and we will see the example after the coding part. So let's take t as the number of test cases, and then while loop for the test cases. Similarly, we have to take two numbers a and b to find the GCD and from the user, and let's say we are making a return type function, and GCD a comma b we are passing as an argument, and what we have to do, just make an integer type GCD function and taking two values as an argument, and if the value of b is 0, then we will simply return a, and else we will recursively call return GCD b comma a modulus b. So this is the code for finding the GCD. So let's see the example first, how we are solving it, right? So I am taking the smaller values for finding the GCD. So let's say 5 comma 15 I am passing as an argument. So this is a and this is b. So as we know, the factors of 5 are, what are the factors of 5? 1 cross 5. And what are the factors of 15? 3. And you can write 1 also, 1 cross 3 cross 5. So only the common factor is 5. So its GCD of 5 and 15 will be 5, right? Only 5 is the common factor, or you can say the SCF of 5 and 15 is 5. So let's see here, I am passing 5 and 15 as an argument here. So b is equals to 0? No. So else what we will return, GCD of, again recursive function, GCD of b, that is 15, right, comma a modulus 15, 5 modulus 15, so it will be 5, right? You know the modulus function working, right? 5 modulus 15 will be 5, remainder will be 5, so 5 we are passing here. Now again, this is a and this is b now. So GCD of, if b is equals to 0, no, b is not 0, b is 5, so return GCD of b, that is 5, right, 5 comma a modulus b, 15 modulus 5, 15 modulus 5, so remainder will be 0, so we are passing 0. So again, this is a and this is b. So if b is equals to 0, yes, b is 0, so we will simply return a, so we will return 5, and 5 is the answer, and we have already calculated as the 5 is the GCD of 5 comma 15. So this is how this code is working, and let's see the short trick, or you can say the inbuilt function to find the GCD of a and b, or you can say the GCD of two numbers. So I am just commenting this whole function, not like this, like this, right? So just comment down this function, and now what you have to do,
just take the input from the user, and this is inbuilt function. This is the function that you have to write and just compile it. So this is the function I am writing here also. Its function is GCD a comma b. These are the inputs or arguments you have to pass, and this is the inbuilt function to find the GCD of two numbers, right? So here is the error n was not declared. So let's remove the error first. Yes, it's t here, right? So now I'm submitting it directly. So it will runtime error. Let's see where we are doing the error. A comma b, range is also true, right? So let's see, code is overall correct. Let's submit once again. It may do some errors sometimes when we submit the code. So yes, our code is accepted. So, and what if we make a function of GCD previously we have made? So let's remove the comment and now submit it. So this code will also be accepted there. So it's your choice what you want to do. Like, you can make the inbuilt function, or you can write inbuilt function, or you can write your own function to find the GCD of two numbers, right? So yes, our code is accepted. So this is how you can find the GCD of two number. So see you in next video. Bye bye. So hello guys, in this question we have to find the LCM and GCD both of the two numbers, and as we know, we have already seen how to find the GCD of two numbers using the trick or using the function that we have made earlier. So let's find the LCM, and first of all I want to show you how to find the LCM. So LCM, to find the LCM we have a inbuilt, or you can say we have a formula. LCM of two number is a cross b, that is the multiplication of that two numbers, and then divide by GCD of that two numbers. So you will get the LCM of that two number. Just multiply the both number and divide it by the GCD of both number. So as we know, the GCD, for GCD, finding GCD, we have an inbuilt function, right? This is the inbuilt function to find the GCD of two numbers, and to find the LCM, just do this. So let's see in the coding part. So I'm taking, we have already took the t, we have already taken the t for the number of test cases, and now I'm taking two numbers a and b for finding the LCM, and these numbers I'm taking from users, right? And now what I have to print first, I have to print LCM first and then GCD. So let's find the GCD first. So G and the variable for GCD, so underscore GCD of a comma b. So this is how you can get the GCD of two number, just by writing one line. Now I'm taking the L as an input, L as a variable for finding the LCM, right? And for finding the LCM, you can do this, a cross b divided by G, that is GCD of A and B, right? So now just print it, L space and G, then next line, right? So let's compile it first, and then we'll move on. So yes, we got the correct output, that is 10 and 5 and 56 and 2. Yes, all right. Let's submit it, and we are submitting it. Now see, we are passing all the test cases or not, and constraints. We may get error because this is not the range of, right? We are getting an error. This is the range that we have to follow, and we are taking input
we are taking integer as in data type, and its range is 10 to the power up to 10 to the power 6, right? So, or you can say 2 to the power 16. So it's longer, the range is longer. So just do this long int t, you 40 integer is also okay, but now let's do this. So now all right, let's submit it now. Oh no, we will get again error because we have not made this as long. And also you can do this, right? Now submit it. So let's see, now our code should be accepted. Yes, finally our code is accepted. So this is how you can find the LCM of two number, and this is the short code to find the LCM. And also we have seen how to find GCD using the inbuilt function and using our on function. So that's all in this video. Thank you. इस क्वेश्चन में हम देखने वाले हैं कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं. So for a given number n, we have to check if it is prime or not. A prime number is a number which is divisible only by 1 and itself. So let's see the example first. So example is the input, only one input we are taking, and that is 5. So 5 is a prime number, so we have the output yes, right? So let's start coding. I am taking t first for the number of test cases from the user, right? And then while loop for number of test cases, and now I am taking that number. तो यूजर से इनपुट में n ले लेता हूँ यहाँ पर, wait, and we'll make another function prime, and I will make a bool function, right? So if it will be prime and we are passing n, right, it is prime, then we'll simply return yes, end of the line.
Alright, so let's make another function, and it's a bool type function, right? Bool prime, it's a boolean function, and we are taking n as an argument. Wait, now what we will do, we will check first in the for loop from int I equals to 2 to I less than n, I plus plus. So if our number is divisible by, that is the modulus with I is equal to 0, so we can say if our number is divisible by any number from I equals to 2 to I less or I less than n, so it will simply return 0, because if the prime number is only the number that is divisible by 1 and only itself, but if the n is divisible by any of the number from I equals to 2 to I less than n, then it is not a prime number, right? So just this, otherwise we will return 1. If the number is prime, then it will not return 0 here, so it will return simply 1 from here. So that's all. Let's check, let's compile it. So it will give the session expired error. So let's compile it. So yes, for 5 our output is yes. And one more thing, we should check the constants also, like n may be up to 10 to the power 9. The range of n is from 1 to 10 to the power 9, and what we are taking n as an integer type. So let me make it long, wait, and also we are giving it n as an argument here, so same type should be here, double long, right? So that's all. And our time complexity is I think order of n, and we can reduce it, but let's submit it first, what it is taking our code or not. Let's see. So your program took more time than expected. So time limit exceed, it means our time complexity is more than expected. So let's reduce it. So we can reduce it up to the under root of n, because if a number is not divisible up to its under root, then we can say it's the prime number. So we can reduce it up to the square root of that number, and let's make it equals to. So now submit it. Let's see our time is reduces or not for this question. So yes, now it is accepted by the compiler that your time is now less than, and it's under the range of the predefined time, like your time should be in this range, then your code will be accepted. So our time is reduces. So this is how we have to write the code for the prime number, and see you in next video. कैसे हैं आप लोग? I welcome you all in my YouTube channel Coding by Fun, and चलिए शुरू करते हैं. So आज का क्वेश्चन है कि हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है. मुझे पता है बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो इसमें करना क्या है, गिवन अ पॉजिटिव नंबर n एंड द टास्क इज टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ n. तो हमें क्या निकालना है, फैक्टोरियल निकालना है. तो चलिए एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पर इन्होंने दो इनपुट लिए हैं. एक यदि 1 हम इनपुट देते हैं तो 1 का फैक्टोरियल हमें पता है 1 ही होता है. अदरवाइज यदि हमें 4 दिया है तो 4 का फैक्टोरियल 24 होता है. तो कैसे होता है, यह उसने एक्सप्लेन कर दिया है. फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 24, राइट? सो चलो हम एक रिकर्सिव प्रोग्राम बना लेते हैं इसके लिए, क्योंकि रिकर्सिव भी इजी है और इटरेटिव वर्जन भी इजी है. तो हम देखते हैं, दोनों ट्राई करेंगे. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक t जो कि नंबर ऑफ टेस्ट केसेस बता रहा है वो मैं यूजर से ले लेता हूँ, ठीक है, t. उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक while लूप लगा दूंगा जो कि t नंबर ऑफ टाइम्स रन होगा. नंबर जितने भी इनपुट्स हम दे रहे हैं जो कि t ही होंगे, राइट? तो सबसे पहले मैं एक n लेता हूँ यूजर से. Wait, now what I will do, I am making a new function fact.
राइट, एंड वी विल रिटर्न, सो रिटर्न टाइप बनाएंगे हम फंक्शन। सो फैक्ट नाम का एक फंक्शन बना दिया जिसमें मैं इस n को पास कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे एंड ऑफ द लाइन भी कर देता हूँ। सो ये फंक्शन हम रिटर्न टाइप बना रहे हैं, मीन्स इट्स इंटीजर टाइप फंक्शन फैक्ट वेयर वी विल टेकिंग the n as an argument. Now what we will do, so firstly we will make the recursive function. Okay, so if n is equals to 1, so we will simply return 1, right, and otherwise what we will do, else return n multiply by fact of n minus 1, and every time we will pass, what we will pass, n minus 1. so let's इसका हम सॉल्व करके देख लेते हैं एग्जाम्पल, राइट। तो एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर एक अपना पेन निकाल लेता हूँ, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो यहाँ पर मैंने n लिया, लेट से n ले लेता हूँ मैं 4, जो कि एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ से हम पास करेंगे 4 इस फंक्शन में, ठीक है। तो इफ n इज इक्वल्स टू 1 फॉल्स, वी विल कम इन एल्स पार्ट। सो व्हाट वी आर रिकर्सिवली कॉलिंग, राइट। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n 4 मल्टीप्लाई बाय what we are doing, we are calling fact again for n minus 1, that is 3, right। तो अब यहाँ fact 3 कॉल हो गया फिर से। so fact 3 मतलब n में 3 आ गया हमारे पास। if n is equals to 1, n 1 नहीं है, तो again we will call this recursively, right, fact function। so what we are doing here, we are doing 3, that is n multiply by fact n minus 1, that is 2, again for the 2, and similarly 2 multiply fact of 1, right, and similarly जब fact 1 हो गया हमारा यहाँ पर, right, so if n is equals to 1, yes n 1 है यहाँ पर, तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे 1। so ये हमारा यहाँ से रिटर्न कर देगा 1, राइट। सो 2 क्रॉस 1 कितना हो गया 2, तो हम 2 यहाँ रिटर्न करेंगे। 3 क्रॉस 2 कितना हो गया 6, तो हम 6 यहाँ रिटर्न करेंगे। 6 क्रॉस 4 कितना हो गया 24, तो 24 एट दी हैंड हम रिटर्न कर देंगे, जो कि हमारा फैक्ट में आ जाएगा यहाँ पर, और ये प्रिंट हो जाएगा और हमारी लाइन एंड हो जाएगी, ठीक। सो इसको कंपाइल करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही है या गलत। सो ये मैंने कंपाइल किया, अब ये बताएगा सेशन एक्सपायर्ड, सो मुझे फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो मैं चलिए पहले रिफ्रेश कर देता हूँ और फिर आपके पास आता हूँ। सो आफ्टर कंपाइलेशन हमने देखा कि हमारा आउटपुट एक इनपुट के लिए जो कि हमने 1 दिया उसके लिए 1 आ गया। तो लेट्स सबमिट करते हैं, ठीक है। तो सबमिट करने पे हम देख रहे हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है, हमारे सारे टेस्ट केस रन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो देखिए हमें मिल रहा है यहाँ पर सेगमेंटेशन फॉल्ट और रन टाइम एरर। तो मैं कोड यदि चेक करता हूँ तो मुझे लग रहा है कोड तो मैंने सही लिखा है, ऑल लाइन्स आर राइट, कंडीशन इज ऑल्सो राइट, राइट। सो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि हमने मिस्टेक कहाँ की है, लेकिन हमें मिस्टेक पता नहीं चलती। तो एक मैं चीज़ और बता देता हूँ, हमें कंस्ट्रेंट्स जरूर देखना होता है कि जो हमारा कंस्ट्रेंट जो हमने यहाँ जो हमने टाइप यूज़ किया है, जो रिटर्न टाइप यूज़ किया है, वो उस कंस्ट्रेंट को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पर n है 18, सो फैक्टोरियल ऑफ n जो 18 है वो इंट की रेंज से बाहर जा सकता है, राइट। सो हमें इन केसेस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए इसे चेंज करते हैं। t की रेंज तो 19 तक है, तो उसके लिए इंट टाइप ठीक है, बट जो n है वो उसकी रेंज भी सही है, बट जो हमारा रिटर्न टाइप है जो यहाँ से रिटर्न कर रहा है वो इंटीजर रिटर्न कर रहा है। तो इससे मुझे चेंज करके यहाँ पर करना होगा लॉन्ग इंट, ठीक है। हमें इसकी रेंज बढ़ानी होगी जो कि वो नंबर वहाँ से रिटर्न कर रहा होगा। तो अब इसे सबमिट करके देखते हैं अब क्या होता है। आई थिंक अब एक्सेप्ट हो जाना चाहिए बिकॉज हमने इसकी रेंज बढ़ा दी है। सो अभी भी सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा है, तो चलिए फिर से चेक करते हैं इसे। तो मैंने फिर से अपने कोड को देखा और मुझे एक जगह और गलती मिल गई जो कि मैं बताना चाहूँगा, फिर से आपको समझाना चाहूँगा, ठीक है। तो यदि मेरा n यहाँ पर होता है 1, तो आपका फंक्शन यहाँ से क्या रिटर्न करेगा, जब डायरेक्ट यहाँ पे 1 आता है तब तो ठीक है, यहाँ पर 1 आ गया, लेट से आपका 1 के लिए सही काम कर जाएगा। लेकिन लेट से आपका 0 है n, राइट। तो जब यहाँ पर 0 आएगा तो इसके लिए तो फॉल्स हो जाएगा, राइट। तो रिटर्न करेगा 0 क्रॉस फैक्ट ऑफ 0 - 1, डेट इज -1। सो ये हमेशा चलती रहेगा,
ये रुकेगा ही नहीं, बिकॉज n तो इसको कभी 1 मिलना ही नहीं है। तो हमें यहाँ पर एक कंडीशन में जो चेंजेस करना है वो ये करना है कि जो हमें n इज इक्वल्स टू 1 लिखा है, इसे हम कर देंगे n लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है तो हम सिंपली रिटर्न 1 कर देंगे। दैट इज यदि n हमारा इनिशियली 0 होगा तो ये फर्स्ट इफ कंडीशन चेक करेगा और यस 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 तो रिटर्न 1 कर देगा। और हमें पता है कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। सो अब इसे सबमिट करते हैं। और देखते हैं कि हमारे सारे टेस्ट केसेस पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो दीज आर दी जो हम छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं कर देते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हम मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं, हमें लगता है हमारा कोड सही है, सो हमारा कोड एक्सेप्ट हो गया। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू वी मेक श्योर दैट वी आर डूइंग राइट और नॉट वॉट एवर द कंडीशंस वी आर राइटिंग हियर, राइट। सो अब हम चलते हैं इटरेटिव मेथड की ओर। तो चलिए अब दूसरा मेथड देख लेते हैं जो कि इटरेटिव वर्जन है और इटरेटिव मेथड के थ्रू हम करने वाले हैं, राइट। सो यहाँ पर तो हमने सब सेम करना है जो कि हमने वी ऑलरेडी टुक द n एज एन इनपुट फ्रॉम यूजर एंड वी आर पासिंग इट इनटू अ फैक्ट फंक्शन, राइट। सो इस फैक्ट फंक्शन को हम इटरेटिव बना देते हैं। तो मैं अंदर का पार्ट इरेज कर देता हूँ, राइट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपली एक फॉर लूप लगाना है और अब उस फॉर लूप को हम स्टार्ट करेंगे 0 से एंड नॉट 0 से, हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 लेस देन इक्वल्स टू n तक एंड i प्लस प्लस, राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे, बैटरी खत्म हो रही है, हम नोट कर लेते हैं, राइट। चलिए सो इसके बाद हम एक नया यहाँ पर फैक्ट नहीं, हम यहाँ पर f बना लेते हैं जिसमें हम हर बार क्या कर रहे हैं, f मल्टीप्लाई बाय i कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से लेकर n तक जाएगा और जो भी यहाँ पर f में आएगा वो सिंपली हम यहाँ पर क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो f हमने अभी डिफाइन नहीं किया है तो चलिए इसे डिफाइन कर देते हैं एंड f जिसमें हम इनिशियली डाल देते हैं 1, राइट। वन मोर थिंग, यदि इफ n 0 होता है तो हम यहाँ कंडीशन लगा देते हैं क्योंकि 0 यदि हुआ तो ये कंडीशन यहाँ पर जो फॉर लूप पे लगी है ये चल नहीं पाएगी, राइट। तो यहाँ पे यदि यदि n यदि 0 होता है तो हम सिंपली क्या करने वाले हैं, सिंपली हम रिटर्न कर देंगे 1, राइट। सो आई थिंक इतना तो सही है। लेट्स इसे कंपाइल करते हैं फिर आपको मैं समझाता हूँ। तो पहले कंपाइल करके देख लेते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है। सो आई थिंक एक्सेप्ट हो जाना चाहिए क्योंकि हमने सारी कंडीशन यस। सो इसे सबमिट भी करके देख लेते हैं एक बार। जो लास्ट टाइम प्रॉब्लम्स आ रही थी वो इस टाइम नहीं आई क्योंकि हमने यहाँ पर रिटर्न टाइप भी लॉन्ग लगा रखा है एंड सारी कंडीशंस हमने देख ली है। यदि n 0 भी होता है तो भी हमने कंडीशन चेक कर ली है, राइट। सो हमारा एक जगह टेस्ट केस फेल हो रहा है। तो दीज आर ये नॉर्मल मिस्टेक्स हमारे साथ होती रहती है। तो चलिए चेक करते हैं कहाँ पर दिक्कत है। हम फिर से चेक कर लेते हैं प्रोग्राम को कि कहाँ हमने गलती की है और मुझे गलती दिख गई है। सो यार ये गलतियां हमसे हो जाती है लेकिन हमें दिखती नहीं है उस टाइम पे। हमने अब फंक्शन का रिटर्न टाइप तो लॉन्ग बना दिया कि रिटर्न करेगा, बट जो रिटर्न कर रहा है वो दैट इज द वेरिएबल f और ये f हमने इंटीजर टाइप बना रखा है। तो इसे भी तो हमें लॉन्ग लिखना पड़ेगा और इसकी रेंज बढ़ानी पड़ेगी, राइट। सो लेट सबमिट नाउ। सो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बिकॉज हमने जो रिटर्न टाइप जो हमारा वेरिएबल f है उसकी रेंज भी हमने बढ़ा दी है। तो अब ये एक्सेप्ट हो गया, राइट। सो ये था इटरेटिव मेथड। तो चलिए इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इसे करना कैसे। तो इनिशियली जो हमारा n पास हो रहा है, लेट्स से वो n है हमारा 4, राइट। तो हमने 4 ले लिया। तो ये चेक कर रहा है सबसे पहले कि 0 है क्या, 0 तो नहीं है। तो चलिए हमने एक f डिफाइन किया वेरिएबल जिसमें इनिशियली वैल्यू 1 है हमारे पास। अब हम फॉर लूप में आ गए i इक्वल्स टू 1 से, तो f बराबर इक्वल्स टू f दैट इज 1 क्रॉस i दैट इज जो इनिशियली हमारा 1 है। तो f में हमारे पास अब आ गया है 1, राइट। जब i प्लस प्लस होगा, राइट, i 1 था अब i प्लस प्लस हो गया 2। तो अगेन f में क्या लिखना है हमें, f जो कि हमारा अभी 1 है, 1 क्रॉस i जो कि हमारा 2 है। तो f में अब आ गया है 2, राइट। i प्लस प्लस i हो गया 3, यहाँ पे 3 हो गया, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू n, राइट। n हमारा 4 है तो f इज इक्वल्स टू f 2 क्रॉस i जो कि हमारा 3 है। सो f में हो गया 6, i प्लस प्लस 4 इज लेस देन इक्वल्स टू n, यस इट इज इक्वल्स टू n। सो अगेन हम जाएंगे लूप में, f इज इक्वल्स टू f दैट इज 6
cross I, that is 4, and it is 24, right? Now again I plus plus, it is 5. 5 is less than equals to 4, false. We will come out of the for loop and we will simply return the f, that is 24 will be returned, and यहाँ पे हमारा 24 प्रिंट हो जाएगा. एंड नेक्स्ट लाइन. सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा मेरा, जिसमें मैंने इन सभी चीज़ों के बारे में बताया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट? सब्सक्राइब कर सकते हैं. उसके बाद आपको एक बेल आइकन मिलेगा. बेल आइकन पे भी जब क्लिक कर देंगे तो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस का पता चल जाएगा. और यदि और भी ज़्यादा अच्छा लगा तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो कि अभी बिगिनर है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, और जिनको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है और जिन्हें प्रॉब्लम्स आती है मैथमेटिक्स में, बेसिक मैथमेटिक्स में, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं. और लाइक करना मत भूलिएगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में एक नए क्वेश्चन के साथ. थैंक यू.